Today I'm sitting down with Samreen Dingankar. She's presently working as a senior creative producer at Eros International. Samreen's born and brought up in Ratnagiri and has completed over 15 years in the entertainment industry. Her expertise spans across films, televisions, digital platforms, and radio. Let's unearth and explore stories about her life, her journey, her experience in the world of glitz, glamour, and sometime glory. Hi Samreen, what's Hi. up? All good. How are you? I am doing great. You seem more happy to see me than me. Happy to see yourself, or happy to see me. No, you're happy to see me. Are you happy to see me as well? Of course I Okay. am. Oh, that's great. So tell me something, first question would be, so you've born and brought up in Ratnagiri, which is I think a beautiful small town, and then you've moved here for Yeah. work and for life and all of that. How did you, adjust from the shift of living in a small town to moving to a big city? Honestly, it would be a lie if I say I have not dreamt about Mumbai every breath that I took in Ratnagiri. So for me, it was like, oh, this is my place. This is where I belong. So I need to escape that place and come to Mumbai. So मेरे लिए adjustment था ही नहीं. It's like I want to be here. This is my place. I was born at a wrong place. That's it. सो हाउ डिड यू गेट दिस रियलाइजेशन? बचपन में कभी घूमने आए थे यहाँ पे बॉम्बे में, या फिर अपने आप जस्ट कुछ फिल्मों में देख के ऐसा लग गया कि वही मेरा शहर है? Every summer vacation was in Mumbai. My extended family lives in Mumbai. My entire papa side family lives in Mumbai. So Mumbai was never like new to me. I have been here multiple times when I was growing up, and Ratnagiri did not treat me nicely. So yeah, why not? And what do you mean by treat नहीं treat किया nicely? मतलब क्या हुआ है? It's a small town. It's a difficult place to live in. Usually we are not allowed to dream big. Also, when I say difficult, I belong to a very conservative family and conservative neighbors and conservative society. And when it is Ratnagiri, it's different. It's different. Like you, for example, if I'm wearing a denim and a t-shirt to my college, I was instantly named as characterless because ऐसे कपड़े कौन पहनता है ऑफिस में, ऐसे कपड़े कौन पहनता है कॉलेज के लिए. So no, that was not allowed. And for me, I guess that was not okay. For me, my the way I was born and brought up and grown up in my family, it was not a normal childhood. So for me, the freedom mattered the most. My voice mattered the most. And I guess that dream is what led me to Mumbai. So I was Right. happy to be here rather than missing Ratnagiri. I never missed Ratnagiri. So Yeah. was it also down to the fact that you being a woman, there were prejudices against women in small towns? Is it something of that as well? Is there a sexist angle to it? 100%. Like मुझे अभी भी याद है जब मैं कॉलेज जाती थी एंड अगर बाय चांस मैंने डेनिम एंड टी शर्ट पहना हुआ है, आई वुड बी बुलीड, आई वुड बी हरास. मेरे स्कूटी की ब्रेक्स फेल किया जाता था एंड अप टू एन एक्सटेंट वेयर आई वाज लिटरली मेंटली हरास्ड एंड forced to escape that place. So that place is a beautiful town in general, but the people are not nice. And now, of course, it has grown up. It's a little better to live in because everyone has a voice now. It's digital, it's internet, and things like that. But 12, 15 years down the line, it was not. Right. It So was difficult. coming to Bombay or Mumbai, what do you think are like the three driving factors that this city brings to anybody who's coming from the outside, who's not born and brought up in the city? I guess dreaming, the freedom of dreaming, the passion, and consistent hard work. Like I feel जो भी यहाँ पर आता है उनको बस ये दिखता है कि हमें करते जाना है. We will achieve something today, tomorrow, 6 months down the line, 6 years down the line. But that consistency कहीं और नहीं मिलेगी. ये यहाँ पर it's like every day. Imagine people from Badlapur, people from Kalyan, every day they travel in the same train, same local. इतनी भीड़ होती है, हम बोलते चढ़ने नहीं मिलता है, but they are consistent. They come every day. We travel every day. We want to dream. We want to live that life. So yeah, we are happy about that. I guess that is something which you don't see in different places. Mumbai is a driving force for so many people. So I think, so you mean to say like this city, like this is the defining factor
when compared to any other big city or even small town. Yeah, 100%, Right. 100%. We are competitive. We have that hunger. We have that passion, and Mumbai brings the best out of us. Right. And when did you decide that you want to be a part of this entertainment industry? To be honest, I remember मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था. आई गेस फिफ्थ या सिक्स्थ में मुझे मेहंदी लगा के रखना पे डांस करना था. एंड आई यूज टू लव स्टेज, like stage, and when I see people clapping when I'm on stage, that used to give me a kick. So that was a driving force when I decided, oh, I love mics, I love camera, I love stage, and Right. this is something which really makes me happy, so why not? But then the next annual function, I was not allowed to dance on any of the Bollywood song, and it brought me down. So I was like, why not? I want to do this. So I guess that is when I realized that ये यही करना है. And how was it, working your way up the ladder in this industry? You are right now a senior creative producer at one of the biggest entertainment houses in India. Okay. So what did it take for you to reach where you are? And was it tough, easy, or was it something in between? To be honest, my entire journey from Ratnagiri to Mumbai was very difficult. First, I come from a very conservative family. Second, Ratnagiri being Ratnagiri, it has traumatized my childhood, my teenage. But I came to Mumbai, and I started working as an AD. I used to earn 8,000 a month at that point of time, and doing as an AD, then working my way up as a costume AD, then making my way up as an ACH, CH. Uh, Definitely, it is not easy to survive, because when you work as an AD, 15, 16 hours of work hota hai. I barely used to sleep for like 3 hours, which is not okay. But then I guess जिस वजह से मैं छोड़ के आई थी सारी चीजें, एंड जो ड्रीम देखा था, अब उसको पूरा करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रोक. सो दैट इज व्हाट आई हैड ऑलवेज इन माय माइंड, कि नहीं यार, गिव अप नहीं करते, देखा जाएगा, अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ है तो ठीक है, उसमें क्या है. But things just kept on happening. There was a time when I did not even have a job. I was like jobless for like 9 months, and this was like exactly in the middle of my career. I had just left Alt, which is Balaji, and was looking out for work. मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इनफ कनेक्शंस बनाए हैं, एंड मे बी मेरे को काम तो मिल ही जाएगा यार कनेक्शंस के थ्रू, या फिर मैं अपने आप को पिच करूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है. बट आई हैड नॉक every door. My messages used to be unseen. मेरे कॉल्स उठाए नहीं जाते थे, classic Bollywood behavior. But yeah, it's crazy. Now that I'm at a position, वही सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि मुझे काम दे दो, हमारा कंटेंट पिच करना है. But then I think, should I behave the same? No. But then what's the difference between me and them? So yeah, I have had my share of difficulties, but I guess वो सारे लोग का होता है, सबकी अपनी एक ट्रैजेक्टरी होती है, and I can't be like, नहीं यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है. नहीं, I had my share, I overcome it, and I'm here today. It's difficult, it's not easy, but it's not impossible. Right. Yeah. And you mentioned Old Balaji. So I think it started somewhere around the year 2016 when the app was that's launched. right. So was it like a deliberate attempt of the management to focus on adult content to gain subscribers, or was it something, which was just so random? To be honest, I had joined Balaji even before Alt was launched. Right. Okay. So that was like year 2015. And Alt as an OTT was a new concept in the market at that point of time. Yes. OTTs उतने थे नहीं market में. I think Hotstar भी just launched किया था. Exactly. Yes. But the point was कि I was super excited for this digital shift that I wanted. I always wanted to work with Balaji, and कितने लोगों ने मुझे बोला कि यार नहीं यार, बालाजी में नहीं काम करते, don't go to Balaji. But when I met the creatives over there and the hiring authorities over there, no one had
in their thought कि उनको adult content बनाना है. That was never the motive. To be honest, मेरे जितने भी interactions एकता मैम के साथ हुए हैं या फिर entire teams के साथ हुए हैं, ये कभी नहीं था कि नहीं यार sex scene डाल दो. No, it was never that intention. But we just wanted to be very bold. We wanted to be creative, and why not talk about the topics that are supposedly forbidden on TV. Right. So that was the main idea behind it. But then things kept moving, and I mean, people are watching that content, right? So obviously, yeah, that's what it happened. So it was never their like deliberate intention to go into that directions. No, I don't think so. Will it be fair to label some of the content of Alt Balaji as soft porn, or is it like taking it too far? I don't know. That's a diplomatic answer. You have to say what you're thinking, what you feel. To be honest, as an audience, like some, audience perspective say yes, and I guess even they are aware of it. But ये सारा वो content है जो 2017-2018 के बाद produce हुआ है. So I guess when they saw that some of the content which had maybe 2 scenes or 3 scenes worked, they kind of moved into that direction. And I don't think so that it's bad talking about it, but it's just that yes, the way it is way too much as an OTT platform. I do feel that. Right. So according to you, like there are about 7-8 top OTTs right now in India specifically. So do you think all of them are seeing green, or some of them are seeing red as well? Of course they are seeing red. So many of them. I don't think so. Apart from 2 or 3 platforms, anyone is doing good in the market in terms of making revenue or generating revenue in general. Because as I said, that OTT, like आप ही सोचो ना कि इंस्टाग्राम पे आप एक रील 30 सेकेंड्स के ऊपर अगर चली जाती है तो हम ऐसे स्वाइप अप कर देते हैं. 1 second if it did not gain my attention, हम ऐसे स्वाइप अप कर देते हैं. There is so much of content out there in the market in general. How can anyone make money out of it जब इतने सारे सब्सक्रिप्शन मॉडल्स आए हुए मार्केट में, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं कंटेंट, यूट्यूब फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है. सो फॉर देम टू जनरेट रेवेन्यू एंड बी इन दैट ग्रीन जोन is so difficult. It is genuinely so difficult. Like me, if you say as an Eros, I have seen हमारे platform पे क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, why does the audience come to my platform, what are they watching, what are they not liking, where are they dropping, and everything I'm aware of. Correct. Yeah. But हमारे पास millions of subscribers है, but are we in the green zone? I don't know. Right. It is very difficult to say नहीं यार मैं तो प्रॉफिट ही कमा रहा हूँ. ऐसे हो ही नहीं सकता. It's not that black and white, no? No, it's not. Plus कितने सारे players manipulate करते हैं industry, so it is not easy. And after COVID तो बहुत OTT is not an easy game for sure. It is difficult. My second question in relation to this will be, so for anybody who is not directly part of the industry, but they have some story to pitch, So how does this exactly work? Do they go to these OTTs or mail to these OTTs, and is it taken during the scripting stage that okay fine we'll take it, or is it taken after the entire film is made and they see it, and if they like it then they buy the entire thing? How does exactly the selling and the purchasing game works? Both ways, to be honest. Like if you have money, if you have produced a content and आपने shoot कर लिया, आपने completely ready कर लिया, आपने trailer उसका ready है, उसके episodes या film के entire screener ready है, okay fine, bring it to us, हम screen करेंगे, and if that genre, if that film fits into the criteria from every aspect of it, when I say every business and programming aspect of it, and if it is good, then of course we take it and we acquire it and then we do whatever we want to do with it. But when you say about the new concepts, no, like
द ईजी प्रोसेस इज कि जाके पहले गूगल कर लो कि कौन से स्टूडियोज है, उनके ईमेल आईडीज क्या है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, एंड जस्ट टॉक टू देम ओवर द कॉल। रिसेप्शन से आपको इजीली कंटेंट पर्सन का नंबर या फिर ईमेल Email आईडी मिल जाएगा। मोस्टली ईमेल आईडी मिल ही जाता है। एंड इफ यू आर परसिस्टेंट, सेंड योर ईमेल आई सेंड योर स्क्रिप्ट, एंड वो स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एंड अगर वो रजिस्टर्ड है, जस्ट मेल इट टू अस विद कंप्लीट डिटेल्स। ऐसा नहीं कि मैम मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, ये आप ले लो, ये एक्टर्स में लेके आऊंगा, बाकी का आप देख लो। ऐसे मतलब मैं मेल भी ना पढूं फिर। like It a has proper to be, pitch deck and all yeah, of it that. has to be a proper pitch deck, and why you want to pitch this to a specific studio, and what are the details and nuances of that specific script। आप मुझे बताओ। अगर आपके पास इतनी क्लैरिटी है, then why not? It also shows us ना कि oh, this pitch is something different। भले ही उस स्टोरी में इतनी एक्साइटिंग चीजें ना हो, भले वो स्टोरी लाइक पेपर लेवल पे एवरेज हो, बट if that person is interesting and if that person is passionate, why not? I mean, just meet that person and see where it goes। You never know कि इस स्क्रिप्ट के अलावा वो हमें कुछ और बना के दे दें, वो हमारे किसी और काम आ जाए। It's not bad to meet people, be it industry or outsider। I'm like, as an Eros, I'm definitely open to meet people। Right. So continuing a conversation about the Hindi film industry or Bollywood, you know, अच्छा, do you prefer it calling Bollywood or Hindi film industry? There's a debate on this as well. So आप क्या कहते हो? यार, है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो हिंदी हो या फिर कोई भी हो, कोई है भी तो हो। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ही। बट टू मेक इट क्लियरर एंड कंट्रोवर्शियल, लेट्स कॉल इट बॉलीवुड। Okay. Sounds controversial already। So do you think at this stage with so much news all around the internet and everywhere that the Bollywood is losing a lot of money, you know, how true is this statement? Every market in and every industry in this universe is losing money। It's not just Bollywood। I was having Like right now? Yeah, right now Okay. the market in terms of films or content in general is not that great। Like, I was having a conversation with one of my colleagues from Korea, and he clearly said that market में पैसे ही नहीं है नया content बनाने के लिए। So it's not just that Bollywood is losing money, it's everywhere। It's just that हम यहाँ पे रहते तो यहाँ की चीजें पता चलती, वो लोग छुपा के रखते हैं। It's just simple। And how do you change this? मतलब ये ऐसे क्यों हो रहा है? Why is it happening? Is it like It's due a to lack of saturation। scripts, lack of good scripts that are being chosen, or what? आई गेस बहुत सैचुरेशन आ गया है कंटेंट में इन जनरल। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल, अगर थ्रिलर चल रहा था मार्केट में, तो सारे प्रोड्यूसर थ्रिलर बनाने पे लग जाएंगे। हाँ, तो yeah, yeah. अगर स्कैम चलेगा तो सबको स्कैम की तरह कॉन्सेप्ट बनानी है। आई गेस दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। एंड कहीं ना कहीं हम बहुत इग्नोरेंट है। हम नए टैलेंट को उतने अपॉर्चुनिटीज जेन्युइनली नहीं देते हैं। Like, when I say this, because I am not from the industry, I did not start from the industry, right? I never had anyone in this industry। Right. So जब मैं AD थी, and अगर मैं अपना point of view लेके जाती थी डायरेक्टर के पास, तो he used to be like look at me ऐसे, and like, तू कौन होती है बोलने वाली? So I know, I have been on that side, and I know what kind of treatment we get। So अगर हम थोड़ा सा ये सोचे कि नहीं यार, एटलीस्ट रिसर्च करते हैं लोगों को क्या पसंद है, किस तरीके का कंटेंट पसंद है, क्या जॉनरास पसंद आ रहे हैं, व्हाट इज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, हाउ कैन वी डू बेटर, एंड हाउ कैन वी बेटर आवरसेल्व्स, एंड think about the content in general, and not just making money, and not just be egoistic। I guess everything can be sorted। Why not? There are, I have met so many writers, creators जिनके पास 4 से 5 सालों से सेम स्क्रिप्ट, अमेजिंग स्क्रिप्ट्स पढ़ी है, बट एंड कुछ स्टूडियोज ने वो लेके भी रखा हुआ है, बट इट इज जस्ट गॉन इनटू अ ब्लैक होल। So if we gonna behave like that, so I guess this is what it is। So what would you suggest to say to a filmmaker? Suppose a filmmaker has the money, would you want him to, or her, or them to make the film and then go to an OTT, or go there at the scripting stage and then pitch? So which one would you prefer? Preferably at the scripting stage, because अगर स्टूडियो आपके पास स्क्रिप्टिंग लेवल से ही अटैच्ड होता है ना, तो उन स्टूडियोज को
स्टूडियोज को पता होता है कि हमें किस तरीके का कंटेंट चाहिए, हमारे क्रिएटिव्स क्या है. इट जस्ट गेट्स अ लिटिल लार्जर देन लाइफ एंड सेल करने की मतलब सेल करने का ऐसे पॉइंट नहीं आता बिकॉज वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी आर द क्रिएटर्स फॉर इट, राइट. बट अगर आप कंप्लीटली बनाओगे, आप अपने सेंसिबिलिटीज से बनाओगे, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट्स टू गो आउट again to the studios and tell them why you made this and what is the vision behind this, and it just becomes a little chaotic. But you just said कि कभी कभार अच्छा स्क्रिप्ट है वो ब्लैक होल में चला जाता है, देन हाँ. फिर क्या होगा? बिकॉज अगर एक ब्लैक होल बट में अगर चला ऐसे सोचेंगे कि ये ब्लैक होल में ही जाने वाला है, इट्स योर नेगेटिविटी ना. देन आई मीन यू नेवर नो कि वो ब्लैक होल में ना जाए एंड बने. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल फिल्म बना भी ली एंड कम्प्लीटली रेडी है, उसके बाद भी तो ब्लैक होल में जा सकती है ना. लाइक अगर 2 साल के बाद, अगर 2 साल किसी स्टूडियो ने उस फिल्म को हाथ नहीं लगाया, उस फिल्म की वैल्यू तो गिर गई वैसे भी. सो एनी विच वेज दैट कंटेंट इज नॉट रेलेवेंट नाउ. सो वो तो वैसे भी जाना है. सो रादर देन पुटिंग योर मनी एंड देन लेटिंग इट गो इन वेन, जस्ट पहले ही थोड़ी मेहनत कर लो. So And what was your experience working for Daily Soaps वहाँ पे? Because you worked with Shashi Sumit as well. तो वहाँ पे how was you? Because जहाँ तक अपने को पता है, and मैंने भी थोड़े दिन काम किया था, कि the shifts are, unreasonably long. It's sometimes bordering on inhuman. So what was your experience? Inhuman is the correct word, to be honest. Like I remember I used to live in Kalyan and मेरी 7 बजे की शिफ्ट होती थी मड आइलैंड. Okay. And Kalyan से मड आइलैंड is like 3.5 घंटा one side journey. So like 7 hours you are आना जाना. उसमें से आप 12 घंटा काम कर रहे हो. My God. तो मेरे को barely 2-2.5 घंटा मिलते थे जो मैं घर पे रहती थी and just leave, पेरीपोना करके निकल जाती थी मैं. वो कुछ नहीं. सो दैट इज द लाइफ. एंड देन अगर आप गलती से भी एडी हो तो फिर तो आपकी पक्का लग गई. लाइक it's not reasonable. It's not like 17-18 hours of long shift, no respect. It's like living in a jail. But to be honest, अगर आपने टीवी शो कर लिया ना 1 साल 2 साल, आप कहीं पे भी सरवाइव कर सकते हो. आपकी चमड़ी मोटी हो जाती है. आपको कोई गाली दे रहा है, स्माइल. आपको कुछ बोल रहा है, स्माइल. हमको फर्क ही नहीं पड़ता. और सुना है कि ये टीवी से उसमें छुट्टी वगैरह भी नहीं मिलता. छुट्टी क्या होता है? मुझे जानना है वो क्या होता है. आप अगर मर भी जाओगे ना तो पहले गाली देंगे, अरे यार बोलकर कैसे नहीं मरा, ये बोल के मरना चाहिए था ना. नो यार, छुट्टी एंड ऑल सब ये सब नहीं होता. कुछ भी बोल रहे हो आप. तो do you think it is changing or is it still the same? चेंज क्या होता है टीवी इंडस्ट्री में? कुछ नहीं. ये सिर्फ सारा अभी भी सेम है. मैं अगर अभी भी जाऊंगी ना, इट्स स्टिल गोना बी द सेम. स्टिल पीपल आर बीन एक्सप्लॉइटेड. स्टिल सैलरीज टाइम पे नहीं आती है. एक्टर्स को टाइम पे पैसे नहीं मिलते. स्पॉट दादा ऐसे ही बुलाया जाता है. 15-18 घंटे काम किया जाता है. कुछ सेट्स पे खाना तो ऐसा होता है जैसे मैं फूड पॉइजनिंग के लिए जा रही हूँ, अपॉइंटमेंट ले रही हूँ. सो it's still the same. I don't think so. Apart from जो ऊपर वाला मैनेजमेंट है and जिन्होंने पैसे कमाने हैं, उन्होंने पैसे कमाए हैं, और जो एक्टर्स कमाते हैं फेम, उनके अलावा I don't think so anything has changed. Also, I saw your phone का back cover. There's this K-drama का thing. He's a K-pop idol. Right. So, do you think Bollywood is still very distant from adapting or collaborating with Korean dramas and these pop shows, or do you think honestly I have a very controversial statement on this. Please. पहली बात तो हम ना, मैंने जैसे बोला कि we as a Bollywood specifically हम बहुत ignorant है. Like हम अगर दूसरे इंडस्ट्रीज को अलाउ नहीं करते इजीली मेंड होने में यहाँ पर, तो ये तो फिर भी दूसरा देश के लोग हैं. सो एंड प्लस द ऑडियंस इज आल्सो वेरी लाइक दैट. लाइक अगर कोई के ड्रामा यहाँ पर बन रहा है ना, तो वो लोग बनेंगे अरे इंडिया क्या ही बनाएगा, इंडियन कंटेंट ऐसा है. उनको सिर्फ वो पहली जजमेंटल हो जाता है. हाँ, उनको ऐसे लगता है कि इंडियन कंटेंट इज लाइक जस्ट साथिया एंड क्या उसे कहते हैं, साथ निभाना साथिया एंड बालाजी का नागिन एंड ऑल दैट. एंड देन लाला धूता नाना, उनको सिर्फ यही लगता है कि हम यही बना सकते हैं. So yeah, because there's a huge section of Indian audience who loves
these Korean dramas and they love these Pakistani dramas. You know, these two kind. 100%. And एक channel भी आया करता था, I think Zindagi नाम था. So there was a huge viewership. Yet nothing of that has been replicated or collaborated from there. Pakistan के साथ collaboration तो खैर भूल ही जाना चाहिए. अभी at least at this time of where we are. But however, taking an idea from there, we haven't seen that happen at all. Nahi, there was this K-drama called Flower of Evil, which was recently remade in India. It was made by Goldie Behel, I guess. It was beautifully done, to be honest. So there was also one more which was made down south, which was not that great. So वही होता है कि लोगों सी के ड्रामास का एक अपना स्टैंडर्ड होता है, एक अपना अलग लेवल होता है, एंड it is because it's a Korean content. Of course, it is based on the geography and the way Korean lifestyle is. So जब अगर हम उसको इंडिया में बनाते भी है, people need to understand that कि वो मेंड होगा adaptation. Yeah, correct, yes, ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से, एंड नॉट जस्ट द टेस्ट बट हमारी ज्योग्राफी अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा एंटायर हिस्ट्री अलग है. सो हम अगर वहाँ पे दिखा रहा है कि स्कूल में बुलिंग हो रही है, तो यहाँ पर उस लेवल का नहीं दिखा सकते. हम नहीं दिखा सकते इन द सेंस हमारा कल्चर ही अलग है यहाँ पर, हमारा स्कूल लाइफ बहुत अलग होती है यहाँ पर. सो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हम नहीं कर सकते. सो अगर कोई भी के ड्रामा बनता है तो उसको हमें अडाप्ट करना पड़ेगा इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, विच पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दैट. एंड आई गेस एज आई सेड दैट बॉलीवुड इनसाइडर्स, हु पीपल हु रन दिस एंटायर इंडस्ट्री आर सो इग्नोरेंट दैट उनको ऐसा लगता है कि ओ के पॉप एंड के ड्रामा इज अ फिनोमेना, हम तो बॉलीवुड है भाई, हम क्यों उनके साथ कोलैबोरेट करें. सो वो है, हम वही कहा ना कि हम साउथ के साथ अभी करना स्टार्ट किया है. yes. हमने नॉर्थ पंजाबीज या फिर भोजपुरी बंगाली कंटेंट के साथ कितना ही कोलैबोरेट किया है. बंगालीज हैव वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी टेलिंग हिस्ट्री, बट हम कितना ही कोलैब करते हैं उनके साथ, नहीं, बिकॉज वी आर इग्नोरेंट अबाउट इट. सो I guess even last year, maybe last to last year, I don't remember, but when Lal Singh Chaddha released Forrest Gump का official adaptation, is also मतलब Amir Khan production is one production which is known to experiment and do different things. Yeah. So जब वो release हुआ, nobody went to the theaters. Hardly few people actually went, you know, in terms of the numbers. But when it released on Netflix, then if you remember, there was a barrage on Twitter, abhi to X कहते हैं उसे, that we should have gone to the theaters. It's such a wonderful film. Because लोगों ने पहले ही सोच लिया कि फॉरेस्ट गम का है, हो ही नहीं सकता, अच्छा बन ही नहीं सकता, सब ने खराब एक्टिंग किया होगा, स्टोरी गलत है, सब कुछ ये है. But when they actually went into OTT and जब वो देखा, then people are saying we should have gone to the theaters and all of that. So I think it's also to do with a lot of how the audience behaves and how they react to the cinema. Because even recently abhi Lapata Ladies, it was a great success while it was there in the theaters. Still not as much as maybe an Animal or something of that sort. But when it went to the OTT, it broke all records. So because people, as you said, be it the ones who are calling the shots or even us as the audience, we are somehow hesitant to see the change or feel the change or experience the change. हमको खुद नहीं जाना होता. 100%. Like मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. सनम तेरी कसम इज अ क्लासिक कल्ट नाउ, राइट? लेकिन जब वो रिलीज हुई थी, इट वाज नॉट अ बॉक्स ऑफिस हिट. इट्स एन इनॉस फिल्म एंड पीपल डिमांड कि हम लाइक पार्ट 2 बनाए हैं. On what basis? Just because आप बोल रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता. You need to turn up at the theaters and then they will say कि अरे अगर अच्छी फिल्म रहेगी तो थिएटर में देखने तो जाएंगे ना. आप कैसे डिसाइड कर रहे हो सिर्फ ट्रेलर देख के कि फिल्म अच्छी है या नहीं है? You need to go to the theaters and watch it. You need to keep your judgment and mentality घर पे. And the fact is also कि डिजिटल पे एक क्लिप अगर वायरल हो गई तो उससे डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये तो फिल्म अच्छी होगी ही नहीं. अरे इसमें ये क्यों है, ये मेरा ये रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो गया. अरे ये ऐसा क्यों, ये मेरे को ऐसे बुरा लग गया. बुरा तो ऐसे लगता है जैसे चने खा रहे हो. एवरी नाउ एंड देन कुछ भी बना लो, बुरा लग रहा है मत बनाओ यार. एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखो. इतना
ऑडियंस इज लाइक दैट एंड देन वो बोलते हैं हमें कुछ नया नहीं दे, कुछ नया तो ये क्या दिया, कुछ पुराना चाहिए, क्लासिक चाहिए, कुछ क्लासिक दिया, अरे ना 2000 में जी रहे हो क्या, एवरीथिंग हैज अ पर्सपेक्टिव फॉर देम, हर चीज में जज करना, अगर इतना समझ में आता है तो आके बना लो ना खुद ही, खुद क्यों नहीं बना रहे हो, लाइक आई टेल यू लाइक रील्स पे व्हेन आई वाज लाइक नॉर्मली मैं कोरियन कंटेंट बनाती हूँ, सो मैंने जेन्युइनली पूछा कि देयर इज दिस BL show called Together the series. It's very popular. So मैंने ऐसे ही जनरली एक स्टेटमेंट दिया which I said कि अगर BL shows इंडिया में बने तो टुगेदर द सीरीज इंडिया में बनना चाहिए एंड मे बी सिद्धांत चतुर्वेदी एंड ईशान खट्टर उसमें लीड होने चाहिए. द अमाउंट ऑफ हेट्रेड आई हैव गॉट उस पे इज नेक्स्ट लेवल. लाइक आई वाज सुपर हैप्पी कि मेरे को हेट्रेड मिला, एंगेजमेंट तो दे रहे हो, अब तुम्हारी नफरत हो या प्यार हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. बट द आइडिया इज दैट पीपल एज एन ऑडियंस उनको सेम कंटेंट हमारे जैसा अगर अंग्रेजी प्लेट में परोसे तो वो लोग ले लेंगे, बट अगर हम दे तो उनको फिर मिर्च लग जाती है. Coming to your, like, moving away from the movies and coming to your personal Instagram feed, you have also embraced the world of content creation, you know, so you have a full-time job and you create content. Yeah. What made you, you know, get into this world of content? Because Bollywood is not making me do that. Simple. अगर बॉलीवुड हेल्प करता बनाने में तो मैं ऐसे अलग से थोड़ी ना करती, यहीं पे कर लेती. मैं तो पिछले आई गेस 6 years से आई एम सेइंग दैट कुछ इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, या फिर लाइक for example, K-pop and K-drama has been like, or you can see Hallyu Wave has been a soft weapon for Korea. Similarly, BL is a soft weapon for Thailand and they are just blooming now. तो मैंने बोला कि हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते ये सारी चीजें, when audience is liking it, जब numbers आपको दिखा रहे, why can't we make it? So they do not want to make it. So when they do not want to make it, I will try making it अलग से. Fair enough. Absolutely. मतलब अब किसी के लिए रुकूंगी थोड़ी ना कि अरे वो बना के देगा या फिर वो अवेयरनेस फैलाएगा तब करूंगी. I just want to make it simple. अब बने नहीं बने वो देखेंगे. If today I ask you to, you know, break a myth surrounding Bollywood, what will that be? Only one. That Bollywood is a bad industry. No, it's not. It has made me stronger. मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है. It has just made me stronger, made me realize that I matter. And if that is something that if Bollywood can give, why not? And any celebrity encounter that you would like to talk about, nice or bad? Okay, celebrity encounter. I don't know. There are so many encounters. Something which is most memorable. So during मन मर्जियाँ मैं ऑफिस में थी and अभिषेक, विकी and तापसी ऑफिस में होते थे because it's an Eros film. So every day I used to see Abhishek Bachchan है वहाँ पर and I used to admire his work a lot because मुझे ऐसा लगता है he is still very underrated. Totally agree. And when I see him, I wanted to click a picture with him. And the fact that I am a creative, so मैं ऐसे सामने से जाके नहीं बोल सकती कि मुझे ना आपके साथ पिक्चर क्लिक करनी है. I cannot do that, right? Because you're colleagues at the end of the day. Yeah. And same office, सब कुछ same. Yes. तो मैं ऐसे lunch के टाइम पे ऐसे यहाँ से जाती थी, right देख के फिर ऐसे आती थी. ऐसे I used to do like 5 days. I have done that. He saw and he was like, "You want to click a picture with me?" And I was like, कहाँ के क्लिक करना है बताओ. So it was that, like, you know, he was kind. It's a very sweet like, thing. Yeah. The kind of rumors and the kind of things लोग उसके बारे में बोलते हैं, it's not fair. He is genuinely a nice human being. Yeah, maybe he was nice to me. I don't know, but he was genuinely nice to me, and it's my experience. मतलब अगर ऐसे देखने जाए तो and to each their own at the end of the day. Yeah, I mean, लोग जब मैं बालाजी ज्वाइन करने वाली थी, मुझे 10,000 लोगों ने बोला रहेगा यार समरीन बालाजी, इंडस्ट्री वाले लोगों ने बालाजी मत ज्वाइन करना, बालाजी मत ज्वाइन करना. एंड आई वाज लाइक व्हाई, लाइक नो यार, दे आर नॉट नाइस पीपल एंड दे डोंट डू गुड थिंग्स एंड थिंग्स लाइक दैट. बट जब मैंने बालाजी ज्वाइन किया 1.5 to approx 2 years with them, I had crazy life.
हाँ, my life, personal life थी नहीं मेरी, but I had a crazy life. And it is said that it is a war zone. आपने अगर वो survive कर लिया ना, आप इंडस्ट्री में कहीं पे भी survive कर सकते हो, anywhere. आपको कोई टच नहीं कर सकता. आपको बैटल ग्राउंड पे छोड़ दो, आप जिंदा वापस आओगे. It's that battleground. So yeah. Awesome. So we have this section called Straight or Twisted, where I'll give you 5 lines individually. You'll have to say whether it's straight or twisted. Now, straight matlab as it sounds कि सीधा है, true है, सच है, and twisted मतलब झूठ है या कुछ झोल झाल है या कुछ भी है. So are you ready, Samri? Yeah, perfect. Great. Some famous Bollywood actors are rumored to be gay but don't openly accept it and identify as straight to protect their reputation. Straight. Bollywood makes the best content. Twisted. If you have money, you have respect. Oh, straight. Big Boss and other shows like it are fully scripted. Twisted. OTT will take over theaters. No, twisted. Thank you so much, Thank Samreen, you. for coming to Twisted Truth. It was a pleasure talking to you. I was. loved your vibe. You're very open and brazen. And thank you so much. Thank you and so much wish for you all the having best. me. Thank you so much for having me. It was genuinely a lot of fun to have this conversation with you. Genuinely. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you.